प्रतिष्ठित मीडिया समूह इंडिया टुडे ग्रुप के बेमिसाल 50 वर्ष पूरे होने पर आज मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेरेमोनियल बेल रिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह सेरेमनी दो ऐसे संस्थानों को एक साथ लाई जिन्होंने भारत को बनाया। इंडिया टुडे ग्रुप ने हमारे देश के सफर को दिखाया तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ने देश की आर्थिक शक्ति को रफ्तार दी। इस विशेष अवसर पर इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन कल्ली मौजूद थी। साथ में NSE के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आशीष कुमार चौहान और इंडिया टुडे ग्रुप के CEO दिनेश भाटिया भी इन विशेष पलों के गवाह बने। NSE बेल रिंगिंग सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक विश्वास है जो ये दिखाता है कि भारत की वित्तीय कहानी किस मोड़ से गुजरी और कहां तक पहुंची। इंडिया टुडे ग्रुप अपनी विश्वसनीयता, हिम्मत और नई सोच के 5 दशकों का जश्न मना रहा है। ऐसे में ये सेरेमोनियल बेल रिंगिंग मीडिया लीडरशिप और बाजार के विश्वास के बीच के अटूट रिश्ते को दिखाती है। This is a very special significance to being at NSE today. A nation's health depends upon its financial strength, and this strength has to be institutionalized. Institutions like the NSE build that strength. Institutions like India Today safeguard it with truth, transparency, and trust. It's the same values which NSE adheres to. And today, this coming together is a moment of purpose. Today's bell ringing is symbolic in many ways for us. At the NSE, a bell marks the trading day. For us, it marks the India Today Group's journey from a magazine born in December 1975. From that very first edition, our mission was clear: to hold up a mirror to the nation, to pursue truth with courage, and to document India as it was, as it is, and as it aspires to be. 50 years later, that mission has not endured, but it has thrived. Today, journalism at the India Today Group is digitally empowered, where storytelling transcends platforms and where credibility and candid, constructive conversations, not clicks and TRPs, become the most valuable currency. We carry forward the same promise that defined us in 1975. To always ask the difficult questions, to always stand tall in the face of power, to always serve the people of India with integrity and courage. Thank you to our readers, our viewers, and the extraordinary teams who pour their passion into this institution every single day. To all of you, I offer my deepest gratitude. Thank you, NSE, for this honor. Thank you, India, for 50 remarkable years. The bell we ring today is for the next chapter for India and for India Today. Institutions like the NSE power the nation's economic growth. Journalism powers a nation's conscience. Thank you. पिछले 50 वर्षों से इंडिया टुडे पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए इंडिया टुडे के रीडर्स को हमारा आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।